How does Yeah. a colony work? Like, के artist अपनी वहाँ collaborations करते हैं, they perform. Is that like, and then people do they have an audience जिससे colony चलता है? Like, how does that whole thing work? मेरे ख्याल में ये सवाल तो आप कॉलोनी वालों से ही Because पूछे हैं, but I'm बट curious. I was just very curious because मैं देखे colony में बहुत no, no. there So are a yeah, lot of artists. yeah, I think it's a very vibrant and very interesting space. I know Saad as well, the person who started it. So it's a bunch of everything. They're doing classes. They have a gallery. They have a dance studio. They have an auditorium. जहाँ पे acting classes भी हो रहे हैं. So but I think it's much needed, to be very honest. It's a very progressive kind of a space. True, जो true. काफी currently very much needed. So I think that's kind of some of the work they're doing. But obviously they're also उन्हें नई जगह बनाई है. They're starting off. So I think the plan is that they're going to expand further and do more things with it. Okay, yeah, that sounds interesting. So yeah, so Uh, I wanted to know a little bit about your like generally background, and then we'll come to the page as well, and come to your expression of art. But first, I want to know just generally the context of how did you come into arts? What was your first, होता है ना जे पहली दफा what was your thing यार हाँ यार मैं I have something, I have an expression that I have to announce to the world, or because I always feel जो artist लोग होते हैं, जो theater के लोग होते हैं, they're a little different from the society. They see the society a little differently. so I think the first thing to know is that obviously I've never been to an art school. Never went to an art school. Never, unfortunately. I wanted to, but मैं कभी the arrangement was such. कुछ हालात थे, जिंदगी थे, कुछ और मामलात थे. So I could never go. I studied economics from Islamabad की university है NUST. मैंने बस बिजनेस पढ़ा और वहाँ से इकोनॉमिक्स में कोर्सेज किए. Then and I never do have any early memories of drawing, to be very honest. I think I'm not one of those people जो आप कहते हैं ना बचपन से ही ड्रॉ करता था. तो माँ कहती है Yeah, इसने तो सबसे पहले पेंसिल पकड़ के लकीरें मारी. So it's never that. Don't yeah. remember drawing at all. To the point where a very large part of my life I never actually remember drawing. Art, and that is why exactly I think art came to me. I have this ridiculous belief that art came to me, and the reason I believe that is that there was one part of my life, one phase of my life in which I was going through some very tough phase, and I think a lot of people go through that, especially जब आप टीन एज में होते हैं, लेट टीन एजेस में, तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल. होती है उस टाइम पे, अनसर्टेनिटी होती है उस टाइम पे. You're not very clear about life, you're not very clear about the purpose of life. Obviously financial constraints भी होते हैं उस टाइम पे. You're not making money, you don't see a lot happening in the world, but you're studying, वो किधर जा रहा है. So I was going through that, and because एक तो, and also if you don't have that self realization, अगर आप अपने आप को, which is a problem with a lot of, I would say, middle class society of underdeveloped countries or developing countries, के जो यूथ, जो यंग लोग हैं, उनको वो गाइडेंस नहीं मिलती. तो इस वाई यू फील मोर लॉस्ट देन probably people in, because आपके पास outlets बहुत कम होते हैं. So I think in that confusion I was, and to add more on that was obviously I was inherently a sensitive person, because, and that's something I was never able to explore because the setting was such के art और अपने आप वो टाइम ही नहीं होता ना. आप अगर एक स्ट्रीम से तालीम, अगर आप एक एजुकेशन सिस्टम ऐसे डिजाइन है कि आपको सोचने को भी वक्त नहीं दे रहा होता. बस आपने मैट्रिक के इम्तिहान देना है, तो 11वीं का इम्तिहान देना है, 12वीं का इम्तिहान देना है, यूनिवर्सिटी में चले जाना है. Yeah. So I think in that confusion, there was one phase that came that was ridiculously a low dip. I would say in like a personal sort of confusion, and it was like sort of a dark time. और उस दौरान there was this one day when I remember I found an old paintbrush हमारे store room में, घर के तीसरे floor पे. Summer vacations थी, I remember, from first year of university. I found an old paintbrush and a red tube of oil paints. So my one of my aunts, she used to paint एक टाइम पे, तो उनका वो मटेरियल पड़ा था. एंड आई रिमेम्बर दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई पिक्ड इट अप एंड आई ड्रू समथिंग. वहां पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था. उस टाइम जब अर्थक्वेक हुआ था नया नया, तो उस अर्थक्वेक की किसी एक बच्चे की तस्वीर थी. So that's what I drew. I still remember the first drawing there. It was all with red paints. And there's that feeling at that point कि this is something that is an outlet. I mean, it's an expression, and you feel so relieved by doing it.
so that's the first time that actually I remember drawing, proper drawing and paint. Painting तो पहली दफा definitely. I didn't even know उस time पे कि वो oil paints को आप use कैसे करते हैं, oil कैसे Yeah. लगाते हैं. So I think that is how I probably started, and I've been drawing since. Those time pe I remember wo vacation summers, so I used to paint 14 hours a day because I was just obsessed with it. And I used to paint 3-4 paintings a day. जो मुझे बाद में किसी ने कहा कि this a lot. मतलब you don't do that. Uh, because because I didn't know anything, and so Yeah, I was you're just like, I kept drawing, I kept drawing because वो अंदर जो कुछ था I had to come out. So that's yeah. how it started. I think it was the 8-9 years back. And I've been drawing since. It went through phases. बीच में मैंने छोड़ दिया, बीच Mm, में 2 साल मैंने बिल्कुल छोड़ दिया. Then I picked up illustration. Illustration came more for a practical reason. yeah. मैं कराची में था. I was working with the British Council. मेरा studio था artist commune में. पर मैं travel इतना करता था कि obviously I couldn't take my studio with me, and you can't do oil paints while you're traveling. So I thought let's buy a tablet and let's draw on the go. जहाँ पे भी मौका मिला practice में रहूँगा. Yeah, That's how yeah. illustration started. बस मैं illustrate करना शुरू कर दिया. तो बस वो illustrate करता रहा मैं. So I think it's a lot of this is just things happening, just coming Skill together. wise, because I'm a novice, like, yeah, मुझे तो क्योंकि इसकी transition skill wise zero idea. From drawing to illustration, is Hmm. it, did your drawing experience help you when you were like illustrating? Is there a certain level of skill that, my question is, एक amateur आके, can he or she develop a skill on illustration alone even if they don't have a drawing experience, you think? I think that's a very good question, and it's something जो मुझे I learned the very hard way. So I remember I used to draw. मुझे 1-2 साल हो गए थे draw करते हुए, but never knew how to illustrate. So there was this one agency जिन्हें कोई storyboard artist चाहिए था. Mm-hmm. So I applied. मेरे उन्होंने टेस्ट लिया पेपर पे, वो मैंने ड्रॉ कर लिया. उन्होंने कहा लेकिन हमें ना डिजिटल स्केचेस चाहिए, तो आप डिजिटल स्केचेस. मैं कहा जी जी मैं तो आता है. एट द टाइम आई डिडंट इवन नो कि ग्राफिक टैबलेट होता क्या है. तो Oh, मतलब कैसे हाउ डज इट वर्क. तो मैं कहा जी yeah, जी वो मैं आपको कर दूंगा. आई थॉट यार पेपर पे ड्रॉ कर सकता हूँ तो कितना ही मुश्किल होगा उसको टैबलेट पे ड्रॉ. एंड आई वेंट एंड आई बॉट. वहीं से मैं निकला, मैंने टैबलेट ली भाई से. आई बोरोड सम मनी, मतलब स्टूडेंट. आई बॉट अ टैबलेट. आई yeah. सेड कि मैं यहाँ से जो कमाऊंगा पे बैक. Hamza, it was hell. It was so different from drawing on paper to drawing on a tablet. I mean, it's actually very different because I because can the imagine. surface is not the same. Hmm. आपको जो पेपर होता है उसकी एक रफ सरफेस होती है, टैबलेट की एक खास स्मूथ सरफेस होती है. उस पर एक होल्ड रखना बहुत डिफरेंट है, उसकी फील बहुत डिफरेंट है. ऑब्वियसली ड्राइंग अदरवाइज हेल्प्स. रूल्स ऑफ ड्राइंग तो वही है, कॉम्पोजिशन के रूल्स भी वही रहते हैं, ठीक है. ड्राइंग की टेक्निक भी वो रहती है. लेकिन इट्स नॉट गिवन कि अगर आप कागज पे ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स नॉट गिवन कि आप स्ट्रेट अवे टैबलेट पकड़ के आप ड्रॉ करना शुरू कर देंगे. इट डजंट वर्क दैट. यू Doesn't हैव टू work like that. स्पेंड इनफ टाइम लर्निंग ऑन Yeah. अ टैबलेट. Yeah, no, that is yeah, that is interesting. And my reason for asking that was also Mary, your co-founder for ProperGaanda. She also learned illustration like that. She's a dentist by profession, but she wanted to just explore. Her journey was actually illustration first and then drawing later. Mm. So it Oh, that's was, interesting. yeah, that kind of thing was interesting. Acha, anyways, where did this page now start? मुझे इस पे नजर पड़ी जब कोविड के टाइम पे, and I liked it because simply because at that time कोविड के अंदर it was just everything, अभी भी वो gloom और बस पता नहीं था क्या Mm. होना है, सारे बस बंद बैठे हैं, and it seemed very refreshing. Okay, there's a nice illustration, you get something from the illustration and there's a music that corresponds it. So it was very, actually it was like वो नहीं होता है थोड़ा refreshing, जरा relax करके बंदा सुन ले. So yeah, I wanted to know how did that like come up. So I think so. The Also, page one thing itself, before, sorry, this is a yeah. very candid podcast of गाली शाली. अगर आपने सिगरेट पीना है जो भी, all is allowed on this podcast. Right. Thank you so much. Cigarette I might take up, but गाली शाली में कोई नहीं. So the page itself went through phases. मुझे याद है मैं एक टाइम पे ऐसे फेज से भी गुजरा जब मैं बैंक्सी एक आर्टिस्ट है यूके का, बड़ा मशहूर स्ट्रीट आर्टिस्ट है. तो एक होते हैं जब आप Banksy, सीख रहे right? होते हैं, बिकॉज बैंक्सी या. Yeah, yeah, yeah. सो जब मैं ऑब्वियसली सेल्फ टॉट थे तो वी सॉ एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट. तो जो अच्छा लगा उसको ये करना है, ये करना है, ये करना है. So I remember I went through this phase and thought maybe एक सूडो बनाऊंगा, अपना सूडो नाम बनाऊंगा और I'll be anonymous and make art.
Yeah, yeah. तो मुझे याद है मैंने पहले पेज शुरू किया था मुसन्नफ के नाम से. दिस पेज वाज कॉल्ड मुसन्नफ पहले, और मैंने फेसबुक पे शुरू किया था पेज वाज कॉल्ड मुसन्नफ, एंड देन इफ देयर वाज जस्ट इलस्ट्रेशन, देयर वाज नो म्यूजिक विद इट. एंड देन वो जब भूत उतर गया साल में कि यार वो एनोनिमस क्या है, दुनिया को पता. उसके बाद तकलीफ ये होती थी कि लोगों को पता ही नहीं है कि मैं हूँ. यार मतलब वो बैंक्सी पत्नी बर्दाश्त कर लेता, भाई हमसे नहीं होता, तो लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मैं हूँ. Oh, I said, fuck it, man. I'm gonna change my name to Abdal Mufti. उसके बाद the music came earlier this year, and music is actually something very interesting. I mean, one thing I keep saying it on all of these, like whenever I get a chance to talk to somebody or like a written piece, these are not music videos. एक तो ये है कि लोगों को ये समझ आना चाहिए, these are Mm-hmm. not music videos. So how did the music come? So whenever I used to draw, अब हर आर्टिस्ट का एक अपना प्रोसेस होता है. Some just get high while they're drawing, right? Some Yeah, just yeah, drink yeah. while they're drawing because that's how they get in the rhythm. I used to listen to music. So I've always listened to music. So when COVID hit, so I have a day job. My day job is actually and it's a very hectic day job. So I work with the Punjab government. Oh, I'm a World Bank consultant to the Punjab government, and I head the research and policy wing of school education department. तो that मैं must be पब्लिक tough. एजुकेशन so मैं पब्लिक एजुकेशन पॉलिसी में काम करता हूँ. So which is, as you can imagine, it's quite tough. Yeah, yeah. एक तो काम बहुत ज्यादा है, दूसरा it's like a high stakes job, you can't really take time off. So when COVID hit, the good thing happened was कि this was a chance to work from home. Even though हमारा सरकार बंद नहीं होती, हुई भी नहीं थी, पर हमें Mm-hmm. वो 3-4, जब वो पीक पे था तो कुछ टाइम उन्होंने हमें दिया था कि आप थोड़ा टाइम लगा लें, एक महीना, like 3 weeks. So then when I'm at home, then I get to experiment. So it was during that time. One day I remember I was sitting. I remember I was listening to Ali Sethi's song Chandni Raat. I was looking at one of my illustrations, uh, and I thought, how can I make this better? I can make this story a bit better, make it a bit more. And that's when I thought about it. What are the 5 human senses? And I thought, okay, visual imagery to hai, Uh-huh. but how can I instigate more senses through the story? And that's Okay. where the music comes in. I thought, okay, what music does is that now when you look at it, what's happening is, okay, there's a visual, it instigates your visual sense as well. It Mm-hmm. also instigates your hearing sense as well. So, and that's when it combines, it enhances that effect of that story, because ab aapko wo double तरह से आप tap हो रहे हैं. And then the text obviously gives it a bit more meaning. So that's where the music came in. So these are sounds that complement the story. Yeah, It's yeah, not yeah. music video. That's really interesting. That's the senses bit that you have mentioned. Especially now that I notice, I think you had put an image of the morning कि ना सुबह बैठ के सुबह की धूप बंदा लेता है, and you feel very you feel energized, and in that Yeah. I would also argue that the sense of smell, your mind cheats you to even have a sense of smell. Did you get? Yeah. Yep. Yeah. And I remember when I did a project, we tried actually in senses वाली discussion. I think मुझे हमेशा बड़ी fascinating लगती है क्योंकि मैंने कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट किया टोरंटो के अंदर. दे वर ट्राइंग टू डू वो वीआर के अंदर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट दे वर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्मेल इन वीआर. Mm. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. उधर मैंने एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लर्न की कि यार हर चीज की स्मेल है. Everything has a smell. Yep. Morning has a smell. You know, घास Mm. की, they all have a smell. And once you start looking at those smells, then you can actually even create those smells. Exactly. Or you can cheat your brain to think, Yeah, 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 to yeah. sort of go, because memory lane, hai na? You basically, Exactly. we've all gone through this, right? We've all have experienced the morning time. It's Yeah, yeah, all yeah. about cheating your brain, or making your brain think about that time again, and it'll come Yeah. back. I would And argue that's where most of our life is about instigating our brain and cheating our brain. yeah, exactly. Because it's all In the here, way right? We've it's lived all in through these. here if you think about Yeah. it. So we've lived through these. So and that's where sound sort of, and that's why I think the most comments that I get is that people say that, oh, we connect with it or we relate with it, because it's, we all experience this all around us every day. It's just bringing it together and combining different elements to instigate your senses, and that's where you think, yes, I've gone through this, and that's where the nostalgia comes in.
Very true. And I think that's nostalgia is the essential thing जो एकदम फिर वो नहीं होता relate करती हैं like yeah man I like this. So what's and what do you plan now to do with this? Also, did you think कि ये चीज like इसका इतना बड़ा response मिलेगा? Well, I think it did really well. Considering I think Yeah, you that's started somewhere around COVID time, where it started at least picking up, and you know. yeah. So I think it was it. I think it went really. I could never have never imagined that it'll go that way. It. I think the so for me numbers don't matter. I mean, a lot of people say that, but honestly, for me, actually, numbers don't matter. For Not me, what numbers, matters not is कि, but like I'm sure with you, especially as somebody exploring art, is this like means to something different, or yeah. you would probably explore this genre in different forms? I don't know. Yeah, so I think the way I would answer it is कि, and this is exactly how this is in my head as well. कि मेरे लिए the goal is to tell stories. It's the story that is important. I do this work because I want to tell stories. Right now, everything else is just a medium. So right now, the medium is what illustrations. The medium is illustrations and slash animations. Going forward, the medium can change. The medium can become theater. The medium can become some other form of storytelling. The medium can become writing, because the goal is to tell stories. Because, and I don't even relate myself or even identify myself as an artist. मतलब because एक तो I think I'm not because I've not gone to an art school, not been trained a certain way, तो मैं अपने आप को वैसे भी outsider समझता हूँ art community से. इस पे भी जरा बात करते हैं बट yeah तो इस पे जरूर करें. yeah तो इस पे बात होनी चाहिए कि मुझे साले एंटर नहीं होने देते आर्ट कम्युनिटी में. मैं यही मैं बात अभी इस पे ही करना चाह रहा था बट तो एनीवेज मैं कंप्लीट अक्सर योर थॉट. आर्टिस्ट के साथ बैठता हूँ, तो जब आर्टिस्ट के पास बैठता हूँ, माशाल्लाह the work is amazing. I mean, there's no denying Yeah. it, and I think I'll never be technically that good. बट मैं अक्सर अपने सामने सोच रहा हूँ कि यार या तो ये आर्टिस्ट है या तो मैं आर्टिस्ट हूँ, हम दोनों नहीं हो सकते. तो यार ये गलत है या मैं गलत हूँ, ठीक है, हम दोनों ठीक नहीं हो सकते. But no, I think yeah. So that is why I don't even identify myself as like an artist. I identify myself as a storyteller. This is a medium to tell stories, and that opens a lot of avenues for me, because it can be anything. I can tell the stories on a canvas as well, if that is what the purpose is. Yeah. Uh, I'll tell the stories, and the idea is what makes me happy is that it's reaching to a lot of people. Obviously, I'm not exhibiting. I'm not somebody who's like having what an artist's life goes through. But at the same time, what I think, yeah, at least my work reaches to a lot of people, which is a good thing. I mean, in these times, at least, if art can give you comfort, then it should. And I think that is the purpose of art at the end of the day. Yeah, man. And I also feel as long as it's giving purpose, right? And it's the person Yeah. who's giving that purpose is making that person happy, and the person who's receiving at the receiving end is also being happy. I think that's the important thing. Yep. लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आर्टिस्ट वाली है ना, सो मेरा जो भी थोड़ा सा वास्ता रहा है आर्ट कम्युनिटी, जो जानता हूँ, मैं खुद बिल्कुल भी नहीं, बट Mm. आर्ट कम्युनिटी के लोग डेफिनेटली बड़े माइंड कर जाते हैं, स्पेशली न्यू एज के जो आर्टिस्ट आ रही है ना, एंड दे जो वो डिस्कवर करती हैं ऑनलाइन, उनको नहीं पसंद. जैसे मैं एक Mm. दो इलस्ट्रेटर्स को जानता हूँ, एंड देव आल्सो डन वेल फॉर देम, यू नो, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, दे मेड इंटरेस्टिंग illustration stuff. So उसमें से एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसका भी यही कहता है यार, the art community does not like me. क्योंकि Mm. एंड आई थिंक होता क्या है, व्हाट हैपेंस इज कि उन्हें लगता है यार हमने पूरे यू नो, क्योंकि वो अगर वो आर्टिस्ट वगैरह वो पता नहीं कहाँ कहाँ खज्जल होए, क्या क्या यू नो, एक आर्टिस्ट की वो यू नो उस टाइम पे स्पेशली पाकिस्तान में तो इतना सा मसले होते थे. आई थिंक दे हैव गॉन थ्रू सो मच स्ट्रगल ना, फिर वो Mm. देखते हैं, कहते हैं यार हमें अभी भी कोई नहीं जानता है इस बंदे को, यार इतने लोग जान रहे हैं, यू नो. आई थिंक उनको बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है, दे लाइक नहीं नहीं यार, ये वाला जो काम है ये ना, ये इधर नहीं आने ये देना, इसको ठीक है, मानना ये ही नहीं. ऑनलाइन Yeah. वगैरह यहाँ ये हमारा रहेगा. हाँ, that's true. Well, that's true, यहाँ but मुझे लगता है कि that's also a bit unfortunate कि इट आपने इज एक एक देखें what is, मतलब आपको, if you go to the core question what art is, then if art is a means of communicating, then या social media becomes a platform through which you can communicate.
आई मीन आप एक गैलरी के अंदर अगर एग्जीबिशन लगाते हैं तो हद मार के 500 बंदा आके देख लेता और होगा वो ना, भी मैं यार कहता एक हूँ बड़े से कम्युनिटी बड़ा का, आर्टिस्ट भी हो तो 500, एंड आई और एक ही आल्सो फील, कम्युनिटी का बंदा। हाँ, या बाहर का बंदा तो आ ही नहीं सकता। एग्जैक्टली यही तो मसला है। वो जो अब ये जो वो गुलबर्ग में भी एक जो भी ये बंदे होते हैं आर्ट के, मैं नाम नहीं बिल्कुल किसी का लूंगा, हमजा आई ये जस्ट फील, इंटरव्यू बाहर गया ना, मुझे बढ़ने नहीं देना किसी ने आर्ट कम्युनिटी में आके, वहाँ कहना भाई आप तो अब मेरे दूर ही जगह डालेंगे। बट मैं सिर्फ कहता हूँ कि जो इतने महंगे महंगे आर्ट सेंटर्स बनते हैं, इतने इतने पैसा खर्च होता है, आर्ट तो जहां तक मुझे पता था, आर्ट तो ज्यादा, मोर पीपल नीड आर्ट, इट शुडंट बी, या देन इट्स समथिंग दिस, इट्स एन एलीट थिंग, ओके यार आप कम्युनिटी में आप बैठते हो, ग्रेट, नोबडी एल्स, एंड आई फील, एंड दैट्स व्हाट स्केयर्स देम as well, I think that's what scares a lot of people जो आर्ट आई थिंक कम्युनिटी आपने के हैं। यू सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच आई हैव आल्सो, आई मीन मैं अक्सर लोगों से पूछता भी हूँ कि आस्क अराउंड योरसेल्फ, आई मीन आप भी अपने इर्द गिर्द पूछे, मैं भी अपने इर्द गिर्द पूछता हूँ, कितने लोग आज तक एग्जीबिशन में गए होंगे गैलरी के अंदर, कभी आप पूछिएगा, and you'll find very few people will say yes. Even लोग जो आर्ट समझते भी हैं, आर्ट को जानते भी हैं, आर्ट को पसंद भी करते हैं ना, गैलरी कभी नहीं गए होंगे। क्यों नहीं गए होंगे? बिकॉज गैलरी का एम्बियंस, अनफॉर्चुनेटली गैलरीज का एम्बियंस ऐसा एक बन गया है कि आपको उधर जाके लगता है यार मैं तो बड़ा बेवकूफ सा आदमी हूँ, मतलब मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि ये जो बनाना बना हुआ है, ये जो केला बना हुआ है, इसके पीछे इतना गहरा मतलब हो सकता है, तो मुझे तो नहीं पता, तो मतलब मैं तो बहुत ही बेवकूफ हूँ। और ये सच है, ये मुझे किसी ने बात कही Yeah, थी लिटरली, उन्होंने कहा यार वी आर पेट्रिफाइड टू गो टू आर्ट गैलरीज बिकॉज इट मेक, बिकॉज उसका एम्बियंस इज वेरी हाई एंड, इट्स एन yeah, अपर yeah, yeah. क्लास, मतलब आपके 4 लाख की एक कैनवस आपके ऊपर आपके सामने लगा होता है, और अब आप उसको देख रहे हैं और साथ उसके एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा राइटअप है, अब आपको लग रहा है कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कि क्यों और ऐसा आप महंगा। राइटअप भी पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं इतनी ऊंची अंग्रेजी लिखी हुई है, ये तो मेरे वैसे नहीं पल्ले पड़ रही, तो अब आप करके उड़ के वापस आ जाते हैं और बिल्कुल, आप कहते हैं, हाँ यार समझ सही था। याद है मेरा भाई मोनालिसा देखने गया उधर लूप में, तो वो खड़ा होके लाइन में खड़ा रहा 3 घंटे, उसके बाद कहता है यार क्या एक आंटी की तस्वीर थी, मैं कहा, यार तो मतलब ये तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। So that's true, and I think sooner or later that barrier has to break, and I think it will break because I see a lot of very good illustrators now ओ या that या are या coming up, especially from Pakistan, and doing great work. और उनका काम is no less than art. I ओ mean, या नो नो वो टाइम या चला गया कि अब आपकी illustration is of the feel of an art piece. So why can't it become art itself? एंड आई थिंक वही है, इट्स जो लोग इसके खिलाफ लड़ भी रहे हैं, आई थिंक इट्स अ लूजिंग बैटल, एंड आई डोंट थिंक एक्सेप्टिंग द न्यू पीपल इन द आर्ट कम्युनिटी इज गोना हार्म देम ईदर। आई डू फील Yeah. उनके लिए भी एक सोर्स है जो बाकी लोग उनका काम भी देख सकेंगे शायद इसी तरह, मे बी दैट्स द वे दे कैन रीच मोर पीपल, स्पेशली अब जब कोविड शोविड में वैसे ही लोग पता नहीं आगे जाके कितना और Hmm. रिमोट कोई और थर्ड वेरिएंट ना आ जाए तो तक बाहर, सो आई थिंक No, that's true. Yeah, that's true. Okay, I think because point is जितने ज्यादा लोगों को आर्ट का पता चलेगा, जितने ज्यादा लोग आर्ट से एंगेज करेंगे, उतने ज्यादा उसकी एक वैल्यू बढ़ेगी सोसाइटी के अंदर। पर उसको ना एक नीश बना दिया गया है, द वे आई सी इट, आर्ट को एक बिल्कुल नीश बना दिया गया है, दैट इज व्हाई वो इन्फ्लेटेड भी है ना, उसकी प्राइसेस भी इसलिए ज्यादा है कि वो ओन करते हैं खास तरह के लोग, अब आर्ट हाँ बनाते हैं खरीदते हैं वो खास तरह के लोग हैं, आपको एक आम आदमी नहीं खर्च नहीं, करता हुआ नजर आएगा पैसे। दूसरा अगर आम आदमी यार जैसे मतलब वो है ही नहीं ना वो चीज, मतलब अगर जाके कोई स्टूडेंट जाके आर्ट ले रहा है उसको जाके उसके कहेंगे तो पागल होते पैसे के पैसे खर्च कर तू, मतलब यू हैव, लिटरली, मतलब तू यार 4 लाख तू पेंटिंग पे ला देते हैं की लोड है, ये वो नेट से वो तो उतार के, कहेंगे तेरा दिमाग लिटरली। खराब है। सो दैट्स ट्रू। एंड तो yeah, that is interesting. It is itself, I think, modern day art, modern day तो नहीं जो पुरानी at least I think art community in itself एक वो hindrance बन चुकी है लोगों के enter होने के लिए. That's very interesting. that's, yeah, maybe, and I think it's about, I don't know how these conversations I think are important. I mean, obviously if they come out it might be taken in a negative light, but at the same time I mean these conversations are important कि भाई क्यों, why can't डिजिटल मीडियम बिकम आर्ट इटसेल्फ, मतलब ठीक है कुछ एरियाज में उसको ठीक है माना जाता है, पर वो इट्स नॉट द मेन स्ट्रीम आर्ट, राइट? आपका मेन स्ट्रीम आर्ट है वो आज भी एक खास तरह की उसके अंदर एक वोकेबलरी यूज होती है, उसके अंदर खास तरह के लोग होते हैं, जो आई मीन ठीक है, दैट कैन एंड दिस कैन आल्सो एग्जिस्ट, बट Mm-hmm. इट कांट बी कि इसको खत्म कर दें या इसको खत्म कर दें, व्हाई कांट बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट, राइट? व्हाई कांट बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट एंड बोथ बी ट्रीटेड एज वर्क्स ऑफ Do you आर्ट? think in its current form जो digital art है that can converge with जो already जो पुराने old school चलता ही जा रहा है? I think, yeah.
I actually see that. I think because, and the reason I say is कि even for myself, मतलब मैंने शुरू देखें as a traditional art, मतलब traditional medium Mm-hmm. से शुरू किया था मैंने. फाइन में oil paints में करता था. मैं आज भी कभी अगर टाइम मिलता है तो मैं oil paints ही करता हूँ. तो and I moved from that to illustration. तो मेरे काम की बहुत सी ज्यादा एक मैं अभी भी कोशिश करता हूँ मैं उसको मेंटेन रखूं कि वो एक एक पेंटिंग की फील रहे उसके अंदर. मतलब मैं उसको हाइपर रियलिज्म में नहीं जाता, हालांकि इलस्ट्रेशन में उसको रियलिज्म में लेके जाना बड़ा आसान भी है, उसको फैंटेसी में भी Mm-hmm. लेके जाना बड़ा आसान है. पर उसको I want to keep it that pure in that sense कि it looks like a work of art at the end of the day, looks that painting की Yeah. feel उसके अंदर होनी चाहिए. And I see a lot of people, other artists who are doing the same, कि वो उसको मेंटेन करते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं. So you already see that I think mergence Happening. happening है. Like आपके मीडियम्स तो वही है ना, आपके वो बेसिक्स रूल्स अगर आप वही पिक कर रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक आपने कोई वेस्ट से रूल्स उठाए हैं इलस्ट्रेशन के. और लॉट Mm-hmm. बहुत से होम ग्रोन इलस्ट्रेटर्स आर डूइंग दैट. सो या आई थिंक इट विद टाइम ऑब्वियसली जैसे ये जनरेशन जो अब डिजिटल के साथ एंगेज कर रही है, जैसे जब when they grow up they might start considering it as art itself. Oh yeah, yeah. Like definitely. Like even you look at like Shazil Malik. Yeah, इस शेजल हो गई यहाँ अब. आई थिंक टोरंटो में एक हेट कॉपी है. Like, I'll send you a link. I don't know if you've seen Hate Copy. That's not like, that's more like modern day illustration, funny, वो, desi culture उसके ऊपर, but like she's made a name for herself just by doing that. Like oh, there that's are, interesting. there's an other, like बहुत interesting लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट वैसे बैठे हुए हैं. एक है जिसको like हॉलीवुड स्टार्स भी फॉलो करती हैं. What she does is वो पेंटिंग्स वगैरह में ना, पेंटिंग पिक्चर्स वगैरह और डिफरेंट चीजों के अंदर she puts that starry effect. Oh, Sarah Shakil, right? I think Shakil, she's yeah, really yeah, good. yeah. Yeah. So yeah, I, there are people definitely, and I think Yeah, it no, there is is a lot of interesting exciting. work. I mean, Shazil obviously is one of the best illustrators, I would say. Mahur Jamal, I mean, she's really good. So a lot of very, very good illustrators who've done good innovating. I mean, आप इस तरह Mhm. देखें ना कि वो innovate कर रहे हैं काम के साथ. It's not like a standard just illustrations जो आप उठा लें, जो आपको मिलती हैं, I think deviant art पे या उस तरह. So that is Mhm. good. But let's see. I think with time, I think time resolves a lot of things. Time will once again decide किस तरफ जाएगा ये. अच्छा, tell me, अच्छा, one other thing, just मैं 2021 के बारे में भी थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ. But you said you work with the Punjab government with schools. Public education is something that I sometimes talk about time to time. But Hmm. public education के अंदर, where is you think art का कोई है वहाँ scope? या is it too far अभी? Yeah. like और बड़े मसले हैं. नहीं, that's a very interesting point यार. यार देखें, I'll be very candid about it. I think public education अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनली ग्लोबली नहीं बात. इशू ये कि पब्लिक एजुकेशन एक तो ये कि आपने उसको सेंट्रलाइज कर दिया, तो वो अब आप यहाँ बैठे हुए पंजाब में 12 मिलियन बच्चा इनरोल्ड है 52,000 स्कूल्स में. And the geography is so diverse. I mean, there's limited resources. अब उसमें होता है ये कि आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं ना. प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? प्रायोरिटी लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि आप सबसे ऊपर डालते हैं वो वाले सब्जेक्ट्स जो आपको लगता है जो आपकी जॉब मार्केट में बड़े बड़े रेलिवेंट है. सो साइंस उसमें मैथ, आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, मैथ्स आ जाती है, साइंसेस आ जाती हैं, राइट? Because job market मेरे से आपके एजुकेशन सिस्टम इज मैप्ड ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म. तो वो जॉब मार्केट में जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वही स्कूलिंग सिस्टम उसको बढ़ाती ही रहती है. अब हम्म. आर्ट की क्योंकि मार्केट एक बड़ी अभी भी बहुत लिमिटेड है, तो वो उसको कभी नीड ही नहीं समझा जाता, खासतौर पर मैसेज को पढ़ाने का. राइट? हम्म. आर्ट को समझा जाता है यार कि जिसको शौक है आगे जाके वो पढ़ ले. आपका आज भी से अंदाजा लगा लें सर कि आपका एनसीए 15 से ज्यादा लोग नहीं लेता आर्किटेक्चर के अंदर, नेशनल बिल्कुल. कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मतलब एक साल में पंजाब से. तो आपके आउटलेट ही नहीं है ना. आप 12 मिलियन बच्चों को आर्ट पढ़ाएंगे तो उसका क्या किधर लेके जाएंगे? लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी तालीम का मकसद है नौकरी लेना. आपकी 90% तो बाजी लिटरली यही समझती है कि तालीम का मकसद है नौकरी लेना. वो उसका आप आर्ट पढ़ा देंगे, वो आगे जाके वो समझेगा, वो कहेगा ये बेरोजगार करके घर बैठा दिया आपने, इसको क्या सिखाया. तो दैट्स व्हाई आई थिंक वो नीड नहीं है, वो पुल ही नहीं है आर्ट पढ़ाने की, नो, यू वेरी राइट. अनफॉर्चुनेटली. मुझे याद है इवन इन अ प्राइवेट स्कूल यार, म्यूजिक, और शायद अब शायद बेहतर हो गया, अब स्कूलों की फीसें भी बहुत बढ़ गई हैं शायद, अब और मेहनत होती हो. बट लाइक आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे म्यूजिक और जो होती थी आर्ट, उसके सबसे
they weren't subject, वो chill वाले subjects नहीं होते कि अच्छा ये kind of break है क्योंकि वो कुछ सर ने भी होना, तो सर ने हमें पाक सर समीन सादी कुछ वो दिखाना है, सर को गाना आता था, वो देखे देखो यार ये मैंने गिटार बजा दी है। और जो हमारी आर्ट टीचर होती थी वो तो अच्छी औरत थी, लेकिन वो वो एक ही चीज हम वो करते थे, बनाते थे, वो पॉट को बना देते थे, या फिर वही टीचर ना ब्रेक टाइम पे हलीम बेचती थी आर्ट सेंटर के अंदर ही। सो काफी ऑफ सीन था। तो वो ना आपने उन टीचर को तो ना आउट कर दिया पूरे पूरे it was a different time, I think. I don't think it was a different time, but like but हाँ ये हाल था। But ये that's true you know that was the, and I think that is still like शायद थोड़ा बेहतर हो गया, and probably the art teacher doesn't sell Halim in the break maybe now, but like I do think कि वो वाली चीज ना, because I do think एक अच्छा art teacher हो जिसको पता हो, who's real savvy, यार ये चीजें कर रहा हूँ, like art people would like to want to listen to that, would want to work on that. I feel कभी वो बताया नहीं जाता। जैसे क्रिएटिव राइटिंग है, इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग में क्यों लोग हिस्सा लेती हैं, या उर्दू लिटरेचर वगैरह में, स्टोरी टेलिंग में, क्योंकि आपको एक्साइट किया जाता है उसके बारे में, अच्छा स्टोरी है, कहानी है, इसके बारे में। इवन स्पोर्ट्स, इवन आई डोंट नो यार, फ्रिकिंग मार्च पास्ट जो पीटी होती है स्कूलों में, यूजलेस। मैंने कौन सा पूरी जिंदगी पीटी करते रहनी है, ठीक है ना, मुझे जिंदगी सिखाई गई है, और मैं करता था, मैं फुल इसी तरह करता था कि भाई ने आज पीटी कर देनी है, जीरो फायदा, मैं कौन सा रेज्यूमे में लेके जा सकता हूँ, आई थिंक इट्स वही अंदाज हमारा इनवाइट करने का, थोड़ा वो नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक उसी एग्जांपल ये है, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि आई थिंक हमारे यहाँ पे आर्ट को ना बस समझा जाता है कि सामने सेब रख दो या कोई दो तीन फल रख दो और इसको बनाते रहो। तो मैंने तो जितनी देखी है, तो वो भी आर्ट जो पढ़ाते भी हैं वो यही पढ़ाते हैं, वो सामने सेब रख दिया तो कहाँ ड्रॉ कर लें, इधर से लाइनें लगा लें, तो वो आर्ट तो ना हुआ ना, वो तो बस आपने ड्राइंग की क्लास है, आपने ड्राइंग सीख ली, वो तो लोग एलियनेट हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार एक आर्ट हुआ। आर्ट तो इज आई वुड से आर्ट इज अ कॉन्सेप्ट। आर्ट कांट बी टॉट, ड्राइंग कैन बी टॉट, स्कल्पटिंग कैन बी टॉट। आर्ट तो आपको एक्सपीरियंसेस से आता है, तो वो तो लाइव एक्सपीरियंसेस तो देने नहीं देते। आई रिमेम्बर एक शो होता था यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा, निकलोडियन पे होता था, किस पे होता था, जिसपे कई बार वो कहते हैं कि शायद यही बंदा शायद बैंक्सी भी हो, मतलब रूमर्स, बट वो एक बंदा था, वो आर्ट थेरेपी करता था, क्या नाम था उस शो का, नाम होता था, और वो बेसिकली ना वो एवरीडे चीजों के साथ ना जायंट चीजें बनाता था, एंड यूज टू बी फैसिनेटिंग। मुझे याद है उस वक्त वो डिज्नी का एक वो घंटे के लिए आता था किसी चीज पे, वो दिखाते थे चैनल, उसमें फिर एक शो ये भी होता था, whether it was Nickelodeon or Disney, I can't remember the name, but I'm sure you might have usko dekhoge na, you'll remember. No, that's interesting. Yeah, and that is what art should do ना, मतलब अगर आपने आर्ट पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ाएंगे बच्चे। आपने बड़ी अच्छी बात की। I'll just share one anecdote. So I started my career as a teacher. I was a part of this program called Teach for Pakistan. आज से 6 साल पहले ना, तो I started, मैं graduate हुआ, वो प्रोग्राम था, वो बेसिकली आपको ट्रेन करते थे as teachers, and then they would put you in these public schools across Lahore, Karachi, Islamabad, like जो under resourced communities. तो वहां पे ना started this activity towards, because मैंने ना पहले 6 महीने देखा कि children I would teach 3rd and 4th grade boys, but they would never open up. I mean, they would never tell me, they would not contribute in class, they would have confidence issues, they would not speak about, let's say, what's, because they was like under resourced communities, so they had domestic issues, they never talk about it. So I started this thing, it was very interesting. I said, उसको basically मैं कहता था, अगर आप एक शहर होते, and so what I would do is I would sit with a couple of students after class, और मैंने उनसे भी कहता था, अगर आप एक शहर होते तो वो कैसा शहर होता, and then I would tell them start drawing, right, and then I would draw one myself, or if let's say a child is very shy of drawing, I would say कि ठीक है आप मुझे बताते रहो शहर कैसा होगा और हम साथ साथ ड्रॉ करते रहेंगे. And Hamza, the kind of things that came out, I mean, it was so interesting, the kind of things that those 3rd graders would make. But if I ever get a chance to show you, I mean, I still kept some of them. I mean, they would tell me things such as कि इस शहर में कोई लड़ाई नहीं होया करेगी, इस शहर में सारे खुश होया करेंगे, इस शहर में ये हुआ करेगा, and then they would like pick colors, हम yellow से color करते हैं. I mean, and for me that is what art does, right? Art opens you up, art takes you this journey of imagination, कि हाँ ये भी possibility है कि मैं यूं भी सोच सकता हूँ. And they would basically reflect their inner self. Yeah, and they would reflect their inner personality in that शहर.
So it was Mm-hmm. it was because cities also have a character, sort of a profile, right? And have a character. Mm-hmm. They have dark places, good places, happy True, true, places, true. and humans also have that. So they would reflect all of that. And I was, मुझे लोगों ने ये कहा यार, nobody ever thought of teaching us art that way. I mean, मुझे सारी जिंदगी आर्ट वही पढ़ाया गया, वो सेब रख देते थे, ड्रॉ करो यार, मैं क्या एक ही सेब बना रहा था, क्या मैं नहीं बनाना आपसे। तो मैं सीखा भी कभी नहीं इसी वजह से, जब जब शौक हुआ तो फिर आप खुद सीख लेते हैं फिर उस टाइम। नो नो, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग कि जो असली शौक है ना वही वो आपके अंदर से आता है, बट आई डू फील कि उसके अंदर थोड़ा बहुत एफर्ट डलना होता है ना, इसी तरह दैट Obviously, यू मेड द yeah, एफर्ट। अगर बंदा छोड़ेगा नहीं, ऑब्वियसली यार इतने सारी चीजें आती हैं, वो बंदा कभी उसे एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। that's true. आई Some थिंक external factor होना चाहिए एक। एक्सटर्नल फैक्टर भी, प्लस हमारे इन एजुकेशन सिस्टम ही एक्सटर्नल इतने सारे मसले हैं कि वो स्पेशली आई थिंक रूरल एरियाज में, वहां तो उस्ताद को स्माइल करना तो कहते हैं कि ना ही करें, इट्स ऑलवेज सीन एज समबडी स्ट्रिक्ट, हु यू कांट Yeah, आस्क क्वेश्चन, या कुछ पूछ नहीं सकते, या वो वाला चक्कर होता है। तो बच्चे का तो आप स्टार्ट से ही वो कह रहे हो जी सवाल नहीं आपने पूछना। एंड exactly. और तो वहां पे आप क्या आर्ट सीखेंगे? आर्ट तो starts with a question. If you're not विद क्यूरियोसिटी, आप वो डिसिप्लिन के नाम पे, हाँ, क्यूरोसिटी, आप क्यूरोसिटी तो मार ही देते हैं ना। वो आई तो थिंक आवर इस एजुकेशन सिस्टम kills that. या वो पाकिस्तान जनरली क्यूरियोसिटी के थोड़ा is on the border about it. Don't be so curious. बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। I won't comment on that, man. Yeah, मेरी no, सरकारी you नौकरी can't. है। मैं जब यहाँ से चले जाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर हम कमेंट करेंगे इसके ऊपर। For sure. But tell me, and I think ये अच्छा एक ending उसके segue है कि and I want to know what do you imagine 2021 to be? Do you think we have, because I feel 2020 में जिंदगियां चेंज हुई, people were isolated and stuff, but I would also argue कि हम हमेशा से बड़े अरसे से आइसोलेशन में है। आई थिंक इस साल बस रियलाइज हमने ज्यादा किया। आइसोलेट तो हम काफी अरसे से हो चुके हैं, लोगों से हमने बात करना काफी अरसे से छोड़ चुके हैं। इट्स जस्ट दैट रियलाइजेशन वी गॉट इट नाउ को यार वाकई हम तो दिस इज वही ग्रास ऑन इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला। सो डू यू थिंक क्या, नॉट प्रैक्टिकल इकोनॉमिक तो चलो जो भी, बट फ्रॉम अ ह्यूमन लेवल ऑफ people's mental health as well and everything, what do you think happens next year? What do we take from 2020? So देखें, there's one way obviously कि you see of this year को फला मर गए, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। There's ये मरे a बाय द when मरते लोग हैं, लाइक कोविड से ज्यादा वैसे ही साल में लोग मरते हैं। जी एग्जैक्टली, आपको भी स्टेटिस्टिक्स में वही कहने लगा था। व्हेन कोविड हिट था तो दो आर्टिकल्स आए थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में और न्यूयॉर्कर में एक था और एक टाइम्स में था, आई थिंक। बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, एक था हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक्स पे था और दूसरा था आई थिंक इट वाज मोर ऑन द लाइंस ऑफ के उन्होंने कवर किया हुआ था कि कितनी डिजीजेस है, कितनी और डेथ्स होती हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि this is still, if you look at some of the previous black plague देख लें, yellow plague देख लें, मतलब they're huge man, उनको वो decades span किए थे उन्होंने और उन्होंने wipe out कर दिए थे पूरे पूरे continents. I would still say COVID is not, the only difference right now is कि आपकी source इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इतना डेवलप हो गया कि आपको लगता है दुनिया खत्म होने लगी है, इतनी सी भी कोई चीज आपको लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी। True. So I actually, to be honest, I want to look at the positive side, and I think there is a positive side to this, which is that we've survived. To be very honest, I think we've learned a lot of things, like what you said. कि आपको realization हुई है कि यार the way we've been progressing as a global society has not been probably in the right direction. I mean, we have been isolated from each other. Our practices are what are the sort of factors that are giving birth to these viruses. You're damaging the environment, and people have started changing. I mean, आप छोटी सी cultures ही देख लें, आपके शादी culture in the society पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा change हो गया, लोगों ने कहा ठीक है small scale में भी शादियां हो सकती हैं। Exactly. I mean, these are like small changes that you do see which are positive. I think humans have this incredible ability to adapt, and you see that adaptation happening. People have adapted.
ठीक है, वो एक क्रिएट हो गया कि 2020, इसमें 2020 का कोई कसूर नहीं है मेरे नजदीक। आई मीन डेट बदल गई है तो कल कोविड खत्म तो नहीं हो जाएगा यार, कल भी सारे लॉकडाउन में होंगे यार, उस गरीब को गालियां दे दे के 2020। 2020 में बड़ी गालियां पड़ी है भाई। वो भी कहता होगा यार मेरा क्या कसूर है भाई, मतलब मैंने वायरस पैदा किए हैं यार, हरकतें तुम्हारी हैं। और मजे की बात है वायरस 2019 से एग्जिस्ट करता है, 2019 में पैदा मजे की होता। बात है वायरस 2019 से एग्जिस्ट करता है। और लानत 2019 पे कि उसने बताया ही नहीं। उसे बताया ही नहीं पता। So I'm hopeful. I think 2021, I think this has been a year of resilience. I think humans have adapted. You have learned a lot of things. तो अरुंधति रॉय की बड़ी इंटरेस्टिंग उनका आई थिंक पीस है, ऐसे है जिसमें she said कि if we come out of this in the same way the which we entered, then we're in trouble. We need to change and at an individual level. आप अपनी practices, अपने the way you interact with people, you need to think through that. The way you interact with the environment, you at an individual level. आप expect नहीं कर सकते massive, मतलब वो होने चाहिए massive policy change, पर we all know with the way the global economic या political वो तो direction अब is. So I am actually hopeful for 2021. I think this would be a interesting year, and the world has come through यार so much shit. या I mean, world has survived through world wars हो गई हैं, क्या क्या हो गया है, ये तो एक साल, मतलब आप घरों में ही बंद हो गए यार, इससे घर में ज्यादा क्या बस हुआ है, and आई yes एम people श्योर have देयर इज opinions. अनदर 2021 में इसके बाद कुछ और होगा, यू नो देयर विल बी समथिंग एल्स वेयर द वर्ल्ड विल बी लाइक, यू नो। Alright, so और अभी फिर 2021 को गालियां देते हैं कि मतलब this is also देखिए अभी भी देखें, this is a trajectory that in which the world is going. I mean this is इसमें 2021 या 2020 का कोई कसूर नहीं है. This is a trajectory of that is a result of our actions. आई थिंक जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज हुई है व्हिच यू सेड वाज कि यू नो कि ग्लोबल दुनिया, यू नो आई थिंक जो सबसे बड़ी रियलाइजेशन है कि चीजें डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं। आई थिंक वो हम पहले हो रहा था बट यू नो नोबडी हैड हैमर्ड इट, हम फिर भी बड़े ओल्ड वेज के थ्रू ही लर्निंग कर रहे थे। आई थिंक दिस ईयर हैज काइंड ऑफ ओपनड एवरीवन लाइक नो मैन, एवरीथिंग वी नो अबाउट एवरीथिंग कैन चेंज, Can वी change. डोंट नो Yeah. एनीथिंग, यू नो। एंड आई थिंक दैट इज इंटरेस्टिंग डेफिनेटली। बट वही बात है कि वो Yeah, आप छोटी छोटी एग्जांपल्स देख लें, द वे पीपल हैव स्टार्ट, पहले कॉन्सेप्ट वर्क फ्रॉम होम इतना अनहोनी समझी जाती थी, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर से कौन काम करता है? आप 8 8 महीने से लोग घर से काम कर ही रहे हैं ना। अब तो बल्कि yeah कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा है पेंडेमिक खत्म भी हो गया तो यू विल वर्क फ्रॉम होम। आपके yeah एडटेक के yeah प्लेटफॉर्म्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं, कॉस्ट सेविंग्स उसमें होनी शुरू हो गई है। सो या यू हैव लर्नड, ह्यूमंस हैव लर्नड। आई थिंक वी गिव आवरसेल्व्स लेस क्रेडिट देन वी शुड। At an individual level people have learned, people have adapted, people have evolved. The only thing that hasn't happened कि parties नहीं हुई यार, मतलब ज्यादा यही हुआ है ना, न्यू वो भी ईयर की लोगों ने पार्टी। की हैं। वो भी लोगों हाँ ने खैर वो भी लोगों ने किए हैं, वैसे वैसे सच्ची जो लोगों ने पेंडेमिक पार्टीज किए हैं यार, पेंडेमिक तब पार्टी के तो लोग नहीं रुके, लोग हाँ। नहीं रुके, लेकिन मारिया बी का बड़ा नुकसान हुआ फॉर श्योर। यार डोंट, ये आपका जो शो है ना, नहीं उसका मैं नाम वैसे ही ही मैं तो यहूदी अपने सॉसेज है, मतलब मैं मुझे ना इन्वॉल्व करें सब में, ठीक है, मेरी मैं नौकरी। यार मैं तो बड़ा सरकास्टिक आदमी हूँ, मैं तो अपनी मैं तो बोलता रहता हूँ। that is but that is true and I think एक और जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है ना, मैंने नोट किया इस साल लोग सेलिब्रिटी से बड़ा तंग आए हैं। लोग हाँ, सेलिब्रिटी that's कल्चर true. से बहुत तंग है, जो अच्छी बात है। लोग ना बहुत एनॉय हुए कि यार नहीं चाहिए, आप सब हम कर लेंगे। That's true, right? That's I agree. Thank you for saying that. I mean, I also मैं तो ये बात बड़े इज्जत से कह रहा हूँ यार. It's about time you think who you want to make a celebrity. I mean, Yeah, you really need to think who you want to make a celebrity, and I think exactly. this has exposed that. Oh कि yeah, यार yeah. मतलब आप हर कोई जो टीवी पे आ जाता है आप उसको बस फेमस करी जाते हैं करी जाते हैं करी जाते हैं, and then those people are exposed on the moment that glam goes away. Yeah, 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 They yeah. when they are revealed as humans, और you आप कहते हैं ओहो ये था. True, 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 true. Yeah. No, bro. This was amazing. And do you know the name of the podcast? I saw you tagged me in the Yeah, yeah, Yahudi yeah. sausage. The Yehudi I love the sausage, name. पहले मैं right? सिर्फ Yahudi sausage पढ़ा और मैंने कहा मैं आपको मैसेज करूंगा हमजा this can't happen. आप नहीं मेरे नहीं मेरी नौ मुझे बेरोजगार करेंगे तो मैं तो नहीं कर सकता. तो यार मैं फिर ये चलो सॉसेज में चला लूंगा. सॉस बेबोई बेसिकली लोग यहूदी हमें ना लोग कहते रहते हैं यार ये रॉ की साजिश, ये यहूदी की साजिश है। हमने कहा यार फिर यहूदी सॉसेजेस, वी लव यहूदी सॉसेज, यू नो व्हाई नॉट। No, no, I really like your platform to be honest. मैं काफी अरसे से follow कर रहा हूँ तो because there was a time we even had a social media platform. So I think you're doing great. So I ओ think मैन, it's important to have these parallel voices.
No, man, I'm glad we are in the same. We are, anti mainstream जो सारे चले हैं, old ways को तोड़ना है. Slowly but surely we will get there. जरूर जी, इंशाल्लाह. फिर हम, anyway, फिर आपको अभी मैं 2021 डराता हूँ आपको. जो बैंक्सी का पीस है ना, आखिरी एलिप्स को उसका पीस है वो, देयर इज अ मंकी, उसने आगे वो प्ले कार्ड पहना होता है, उसमें लिखा होता है लाफ नाउ सून विल बी इन चार्ज. हाँ, तो आई थिंक लेट्स जस्ट से दैट कि ऐसे ही. 2021 इज आवर ईयर. We should all hold our placard. We are coming. हमारा टाइम आएगा. But nah, man, I actually, this might be too optimistic, New Year ki wave mein, but like I do think 2021, it's for artists like parallel new age media platform. Things are changing, and I think that's good. We are going definitely towards a more democratic system. I do have some lot of things to say about that as well. कि वो काफी mob mentality में भी बन जाता है, but वो फिर एक लंबी लंबी discussion है. But yeah, thank you so much.